Mhm. The first thing we are going to do today is read that story, the fisherman and the businessman story. You will try and understand. We agree that the fisherman has the best life, because he's doing things that only some people can do. He's not living a slave's life, which a lot of people are doing. They get up in the morning and they go to work, and not that they want to. They go to work and they are there, stuck. Sometimes they travel for 2 hours to get to work, and they travel for 2 hours to get home in the evening, stuck in the traffic. Not that for 2 hours the bus is moving, stuck, going at the speed of a turtle, you know. Big cities, traffic is a big problem. Sometimes when we feel attracted to something, we do not look at the whole picture. We look at certain things and we become over fascinated. Ask anybody in a village, about city life, and they say, "Oh, beautiful." Yeah, they have a romantic picture of city life in their mind. What do they think of? First, they think of big markets. Then they think of pretty girls in the shops, in the streets. In those who live in small villages, girls who do fashion. You know, they also think of fast life, and they find it fascinating in a way. Dance clubs, discos, parties, restaurants. These are the things they look at, but they don't look at the fact that in cities, a lot of people have a small houses. Okay, those who are rich, they are paying a price. A lot of people are very busy, don't attend their family weddings, occasions like birthdays and anniversaries. They're too busy. And if they get there, they are in a hurry to come back in half an hour. Don't you want to be a little relaxed in life, take it easy a little bit? So they don't look at that aspect, that in a village, you have a relaxed life. They don't value it until they lose it, right? The appreciation comes sometimes, but a little too late when things are already gone. So I think this story, the fisherman and the businessman story, is a very deep story. Okay, if you understand and appreciate the message here, let's listen to the story in detail, understand the language first, and then we will talk about its philosophical side. Okay. Yesterday we did exercise 3 here. The statements are true or false. Okay. So it's time for us to just listen to the story. Okay. Every story is a conversation. Please understand what I mean when I'm saying this. Every story is a conversation. It means, or we can say, in every story, there must be a conversation. There are characters in a story. The characters do something and they say something. Okay. So a story is a combination of their actions and their comments, what they said and what they did. The difference between a conversation and a story. What is the difference between a conversation and a story? Conversation, when two characters or more characters have, exchange their views through words. That conversation. So that has to be part of the story. The conversation has to be, because if nothing was said, what kind of story would it be? Okay, something has to be said. Somebody should say something. And then in the story, okay, please come. Good afternoon. It is
this story will also help us understand how in stories, the dialogues, the conversations are reported in a different way. I'm trying to show you. I'll simply take you to the book first. Then you will understand me better because we are in a language class here. So we are going to, of course, appreciate the language side of the whole exercise. Let's see. Businessman and the fisherman. Good morning. What beautiful tuna. How Oh, long did it take to catch them? Alexa, Oh, about connect 2 to the hours. computer. Only 2 hours. Amazing. Why didn't you fish for longer and catch more? I didn't want to fish for longer. With this, I have enough fish for my family. But what do you do with the rest of your day? Aren't you bored? I'm never bored. I get up late, play with my children, watch football, and take a siesta. Sometimes in the evenings, The businessman and Look at your book. Look at the page. I'm gonna share the page as well here on my screen and listen to the lines and see what's written and what is being said. the fisherman. Good morning. What beautiful tuna. Okay. Good morning. What beautiful tuna. In the audio, the story starts here because in the text, read, an American businessman was on holiday in a fishing village. Yeah, this we can write in a story. But in real life, we don't need to say this. Yeah, the businessman went there. Okay, we are writing about it. An American businessman was on holiday in a fishing village in the south of Mexico. One morning, he met a young fisherman with a small boat full of lovely yellowfin tuna fish. Tuna fish is a kind of fish. What beautiful tuna. And this is where the conversation started. He started the conversation. Good morning. What beautiful tuna. The American exclaimed. So there is a verb here, exclaimed. Which form of the verb is it? The second form or the third form? You guys look and tell me. Is it the second form or the third form? Because, why am I asking this question? The second form and the third form look the same. Exclaimed, exclaimed. But you can still tell me whether it is the second form in this sentence or the third form in this sentence. What do you think? It is the second form because after the subject, the verb is used in the second form and that is past tense. Right, guys? Past simple. Yeah, you understand what I said? Second form of the verb refers to the past simple, right? It is about past finished actions. So the American exclaimed means American said with surprise. When you say something with surprise, then you say exclaim. For example, without any information, if you reach Nani Ghar, your mommy sees you and says, Are? Then she exclaims. So exclaim means to say something with a surprise. Good morning. What beautiful tuna. The American exclaimed. Exclaim means to say something, but to say something with a surprise tone, with a surprise in your voice. Tum fast aa gaye. Now, this is also exclaim. I exclaimed. So when you exclaim, you say something. To exclaim means to say. To exclaim means to say. But the difference is to exclaim means to say with a surprise in your voice. That is called exclaim. All right. The verb exclaim is often used in the writing. When somebody says something with a surprise in their tone, okay, then that is exclaim. Okay. What beautiful tuna. The American exclaimed. The American said with surprise in his voice. What beautiful tuna. Okay.
How long did it take to catch them? Oh, How long did it take to catch them? How long did it take to catch them? Now move on to the second page, beta. How long did it take to catch them? Here, them refers to beta? The fish. Okay. Remember, fish is an important English word. It's an important English word. You'll say, why is it important? Everybody knows fish means machli. What is important about it? I'll tell you why it is important, children. Pen means kalam, ek kalam, and pens is the plural of pen. Boy is the singular and boys is the plural. But you know what? When you want to say ek machli, you say a fish. Dher sari machliyan, you say a lot of fish. No need to say fishes. Ek machli, a fish. Dher sari machliyan, a lot of fish. So that's why it is important. You will say, but in my childhood, I read that fishes is the plural of fish. You will say, sir, a lot of fishes now, because fishes is the plural of fish. I read in my childhood. That's why it is important. Yes, fishes can be the plural of fish, but in a certain way. I'll explain. I have an aquarium, and in my aquarium, I have a tiger shark, I have a golden shark, I have two species, two. So I will say I have two fishes. I have two fishes means not quantity, two kinds of fish, two fishes. Two fishes does not mean one fish, two fish. Two fishes means two kinds of fish. Suppose I have a big pond, and in that pond I have rohu. I also have mangur, and I also have jasar. So I will say I have three fishes. Three fishes in that pond. Okay, I have three fishes. It means 1, 2, 3. Bas utha liye, 3 fish ka khatam. I have lots of fish, but three fishes. Three fishes. So now you understand why fish is an important word in English? Because its plural is funny. The plural is the same, fish. And when you talk about the kinds of fish, then you say fishes. It's an important word. I hope you understand. Okay. So he says, how long did it take to catch them? He is saying them because there are a lot of in the boat, in the, and that's why he said, ये सारा fish पकड़ने में कितना समय लगा भाई? How long did it take to catch them? The use of did refers to the past tense, पकड़ लिया, पकड़ने में लगा, did. Okay. How long? The question word, कितना समय लगा? How long? कितना घंटा, कितना month, कितना दिन? How long did it take to catch them? पकड़ने में कितना टाइम लगा? होमवर्क बनाने में कितना समय लगा बच्चों? How long did you, नहीं है देखना, वहां पर it है, it मतलब सब्जेक्ट हमेशा फिक्स हो गया इसका. How long did it take to do the to catch the tuna, नहीं हटा क्या बोल दिया? To do your homework. How long did it take to do your homework? How long did it take to do your homework? आपका होमवर्क करने में कितना समय लगा? How long did it take to do your homework? Any problems? A lot of people are absent. Do you have information about them? Afridi, the two sisters, and Rudra, and Mapara, and Rajalakshmi, Afzal. So many people are absent. Abhinav, yeah. So please, if you are in touch with anybody, ask them why they're absent. They should not be absent. Some exams are going on. Let's see. How long did it take to catch them? The American asked. Now this part, the American asked,
In the conversation, you will not say the American asked, because conversation you can hear the American asking. It is the American's line. So how long did it take to catch them? Them means the fish. 2, 3, 4, 5, all the fish that you have in the boat. Okay. How long did it take to catch them? Them always refers to plural number. Them cannot refer to a singular number. For singular, we have it. For plural, we have they and them. They in the subject form, them in the object form. Okay. They are beautiful, the fish. You saw the fish and you said, wow, they are, because you don't have one fish. If there is only one fish, oh, it is beautiful. Okay, simple. Oh, okay, so listen, how long did it take to catch them? About 2 hours. Oh, about 2 hours. Said the fisherman. Look at that part. Said the fisherman. Said the. Normally, you do not use the verb before the subject. Do you use the verb before the subject? For example, do you say live you? Study he? You always say he studies, you live. The subject comes first in English and then the verb. But when you are referring to somebody's comment, like, oh, about 2 hours, said the fisherman. Who said? Said the fisherman. अगर इसको आगे से लिखेंगे, the fisherman said, comma inverted comma, oh, about 2 hours. So we can also learn that in the inverted comma, we have a comment from somebody else, a statement from somebody else. Inverted commas use is this. When you use somebody else's words, you put them between inverted commas. How long did it take to catch them? Inverted comma. The American asked. Oh, about 2 hours, said the fisherman. पहले बोल दिया said, जबकि नॉर्मली वर्ब पहले नहीं बोलते, सिर्फ ऐसे ही जगहों पे जहां पे किसी की बात बता रहे हैं, ठीक है? No, you will not go, comma inverted comma, said Papa. No, you will not go, inverted comma, said Papa. पापा ने कहा. पापा ने क्या जवाब दिया? नहीं, तुम नहीं जाओगे. No, you will not go. ये पापा के वर्ड्स थे. Any problems, guys? So, oh, about 2 hours, said the fisherman. Yes. Any questions, anyone? Shashi, everything is all right? Everybody understands? Yes, strange case है जहां पर verb कहाँ है? Subject के? Normally, verb is not before the subject. किसी कमेंट बता दी, किसी ने क्या कहा बता दिया, उसके बाद लिखा किसने बोला था. आपके पास दोनों ऑप्शन है, देखना ऊपर में, the American asked, और ये भी ऑप्शन है, said the fisherman. ऊपर भी हो सकता था, how long did it take to catch them? Asked the American. ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? इस वजह से लड़के बचपन में डेवलप नहीं कर पाते क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वर्ब को कहां रहना चाहिए. हमेशा रहना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, but in some situations it can come before the subject. Yeah. Like this, said the fisherman. Now, Only 2 hours. only 2 hours. Now that part is not written here, right? That part is not written. Only 2 hours. Amazing. Amazing. Now, from this, what do you understand? When he says only 2 hours, amazing, we understand that the fisherman is really good at his work. He's good at fishing. These 2 lines tell us that the fisherman is good at his work. How do we know? Because he said only 2 hours. Amazing. It means he has done a good job. It means he has caught a lot of fish in 2 hours. The businessman is impressed. The businessman is impressed. Only 2 hours. Amazing. Don't forget this compliment. It's a compliment to the fisherman. Somebody asks you when you speak English, and somebody asks you, how long did you learn English? You say, for 2 months, for 3 months, and they say to you, that's amazing. Only 2 months. It means you have learned a lot in 2 months.
That person wants to say that you have learned a lot in 2 months. I hope you understand. So he says only 2 hours. Amazing. Why didn't you fish for longer and catch more? Why didn't you fish for longer and catch more? He made a suggestion. Why didn't you fish for longer and catch more? और करना चाहिए था. 2 घंटा में इतना हो गया तो. A lot of people say this. इतना समय हो गया तो और करते थोड़ा. You know. Why didn't you fish for longer? Why didn't you fish for longer and catch more? In this sentence, you can look at the sentence in the text. Underline the verb. I'll be right back. Underline the verb, everybody. Why didn't you fish for longer and catch more? So here the verb is fish. And this fish is not machli. This is machli marna. So, Umar, why didn't you fish? ये लाइन तुम नहीं बोल सकते हो अगर फिश मतलब why didn't you cat नहीं बोल सकते. Why didn't you dog नहीं बोल सकते. Why didn't you fish बोल सकते हो. लेकिन why didn't you cow नहीं बोल सकते हो. Why didn't you rat नहीं बोल सकते हो. Why didn't you a buffalo नहीं बोल सकते हो. क्योंकि didn't you के बाद तुम्हें क्या चाहिए दोस्तों. Didn't you के बाद एक verb चाहिए. Didn't you. तुम्हें पता है ना. Did you plus V1 to make a question, negative question. क्यों नहीं किए. Why didn't you laugh? Why didn't you eat? Why didn't you cry? Why didn't you study? Why didn't you do your homework? Why didn't you say sorry? Why didn't you sleep? Maybe मैंने repeat कर दिया हो. Okay. Why didn't you dance? Why didn't you hide your face? Why didn't you go to the bathroom? Why didn't you run? Why didn't के बाद हमेशा V1 चाहिए ना. ये काम क्यों नहीं किया. जो भी वर्ब होगा. क्या उसने कहा why didn't you क्या. Why didn't you have a bath. नहाए क्यों नहीं. Why didn't you have a bath. तो कोई भी काम नहीं किए वो didn't you के बाद वो काम बोल दो. Why मतलब क्यों. Didn't you नहीं किए कोई काम ही बताना होगा. तो why didn't you say sorry. Sorry क्यों नहीं बोले. Say verb है ना बोलना. Why didn't you sing. तुम क्यों नहीं गाए. Why didn't you sing SING. तो कोई काम नहीं किया. Why didn't you plus V1 ही आएगा ना हर हाल में. तुमने क्यों नहीं बेच दिया घर अपना. Why didn't you sell your house. तुमने एक नया घर क्यों नहीं खरीद लिया. Why didn't you buy a house. अंडरलाइन करो और होमवर्क HW कर दो उसको वहां पे धीरे से कि इसमें प्रैक्टिस कर लेना है. Okay. Why didn't you fish for longer and catch more. Why didn't you fish for longer and catch more. अभी इसमें फिश मतलब क्या है यहाँ पे. ये फिश वर्ब है कि नाउन. अगर ये नाउन होगा जैसे कैट मतलब बिल्ली तो हम कैसे बोल देंगे why didn't you cat. मतलब क्या हो गया कुछ भी नहीं. तुम बिल्ली क्यों नहीं किए मतलब क्या. Why didn't you dog. तुमने कुत्ता क्यों नहीं किया. ऐसा क्या मतलब होता है. कोई मतलब होता है इस बात का. वहां पर वर्ब बोलना पड़ेगा. तुम चुप क्यों नहीं हुए. Why didn't you shut up. ठीक है. चाहे कुछ बोले क्यों नहीं. Why didn't you say something. तुम कुछ बोले क्यों नहीं. ठीक है. तुम उठे क्यों नहीं. Why didn't you wake up. तुम खड़े क्यों नहीं हुए. Why didn't you stand up. तो वर्ब भी चाहिए ना. अब वो सोच करके देखो उमर बेटा. Why didn't you fish. तुम फिश क्यों नहीं किए यानी मछली क्यों नहीं पकड़े. Why didn't you fish for longer. ज्यादा देर and catch more. और ज्यादा क्यों नहीं पकड़े. ज्यादा देर पकड़ते तो ज्यादा देर मछली मारते तो ज्यादा पकड़ते. Why didn't you fish for longer and catch more. More what. Catch more fish. Catch more. Right. Catch more fish. अच्छा देखो यहाँ पर गौर से मोर को देखना. मोर MORE. ओके. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश में. इसमें कई बच्चे काफी समय तक नहीं कॉन्फिडेंट हो पाते इसके सही यूज के लिए.
मोर वर्ड का इतना यूज कर पाते। आई विल टेल यू व्हाई। हमारे पास कितने दो पैसे हैं? how much money do you have? सर मेरे पास 200 रुपए है, मेरे पास तुमसे ज्यादा है। आई हैव मोर मनी। आई हैव मोर मनी। मनी इज अ नाउन। नाउन के बारे में जो भी वर्ड कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? मोर मनी। मोर एक एडजेक्टिव है। आई हैव मोर मनी, राइट? ये मोर क्या है? Okay. Why didn't you fish for longer and catch more? Catch more what? Catch more fish. तो फिश को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो, how much money do you earn? I earn 500 rupees every day. If you work for me, okay, you will earn more. You will earn more money. Okay? तो जो मनी को बोलने से रोक दिया, नाउन को बोलने से रोक दे, वो वर्ड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन को यूज होने से रोक दे, उसकी जगह खुद आ जाए और कहे कि हो गया, काम हो गया, तो वो वर्ड को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो अभी जब मोर को बिना नाउन के बोले तो मोर क्या है? वो प्रोनाउन, और उसके आगे नाउन लगा दे तो एडजेक्टिव है। कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है कि वही वर्ड एडजेक्टिव होता है जब नाउन उसके आगे है तो, और वही वर्ड प्रोनाउन बन जाता है जब नाउन उसके आगे नहीं है तो। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोनाउन मतलब एक वर्ड जो नाउन के बदले आए। मतलब नाउन के बदले मतलब नाउन की जरूरत खत्म कर दे, रहने दो हमें। जैसे आई लाइक दिस चेयर, इट इज ब्यूटिफुल। इस पूरे सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है? इट। इट किसके लिए आया? अगर नहीं बोलते इट तो क्या बोलते? द चेयर इज ब्यूटिफुल बोलना पड़ता ना। तो जो नाउन के यूज को रोक दे वो प्रोनाउन। तो यहाँ मोर एक प्रोनाउन है, देखो गौर से। व्हाई डिडंट यू फिश फॉर लॉन्गर एंड कैच मोर? कैच मोर व्हाट? तो यहाँ मोर फिश को आने से रोक दिया ना, समझ में फिर भी आ गई बात। यानी ये मोर क्या है? प्रोनाउन है। और अगर फिश लिख देते तो ये मोर क्या होता? एक एडजेक्टिव होता। क्योंकि एक नाउन के पहले क्या आता है जो उसके बारे में कुछ बताता है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक? 2 liters, somebody said. I said, I drink more. I drink। तो यहाँ पर जैसे मैंने मोर बोला तो आप समझ गए कि मैंने मोर मतलब क्या बोला है। तो ये मोर यहाँ प्रोनाउन है कि नहीं? और अगर मैंने कहा होता आई ड्रिंक मोर वाटर, तो ये मोर क्या होता? एडजेक्टिव। इजी। Aren't you bored? Okay, why didn't you fish for longer and catch more? The Mexican replied, अभी सुना आगे, why didn't you fish for longer and catch more? I didn't want to fish for longer. अच्छा, आगे लिखा the Mexican replied. Replied is V2 and V3 both. Okay. The V2 form is replied, the V3 form is also. What is this here? It is the second form. It is the past tense. The American replied, the Mexican replied. Mexican ने reply दिया, जवाब दिया, reply दिया, दिया है ना, दिया। और देता है तो the Mexican replies, और दिया तो replied, past tense। देता है replies, दिया ओके। पीता है drinks, पिया drank। रहता है lives, रहता था lived। ये करेक्शन दिमाग में बनाओ। ओके। हम कमाता है earn या earns, कमाया earned। Okay, so here the Mexican replied, I didn't want to fish for longer. मन नहीं था ना। I didn't want to fish for longer, मन ही नहीं था, और करने का मन ही नहीं था, मछली मारने का मन ही नहीं था और ज्यादा। I didn't want to fish for longer. With this, I have enough fish for my family. With But this, what do with this, I have enough fish for my family. With this, I have enough fish for my family. ये जो है ना काफी है। With this, I have enough fish, enough fish, enough money, जितना पैसा चाहिए उतना। Enough means जितना चाहिए उतना। काफी वर्ड बोलने से कुछ लोग समझते नहीं है। जितना चाहिए, I have enough fish for my family. Okay,
एंड व्हेन यू से इनफ फिश फॉर माय फैमिली, तो फैमिली के फिश खाने के लिए कि फैमिली के लिए काफी है? नहीं, फैमिली की जो जरूरत उसकी पूरी हो जाएगी, चाहे वो बेच के हो चाहे खाना बना के हो, राइट? ही हैज इनफ फिश फॉर हिज फैमिली, ओके? परिवार को जितना चाहिए हो गया, घटेगा नहीं। Do with the rest of your day? What do you do? But what do you do with the rest of your day? Now the American is feeling curious. Hi, what do you do with the rest of your day? What do you do? Common है. With the rest of your day. बाकी दिन. बाकी दिन कौन सी करते हो? हिंदी में दो वर्ड यूज के, बाकी दिन. But in English, with the rest of your day. With the rest of your day. 6 words. In Hindi, बाकी दिन कौची करते हो? 2 words. बाकी दिन. जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ओके? तो बाकी दिन क्या करते हो? What do you do? What do you do with the rest of your day? भाई तुमको 10,000 मिलता है महीना में, you give 2,000 to your wife, कौची करते हो बाकी पैसवा का? What do you do with the rest of your salary, with the rest of your money? अरे 3 को वाइफ है ना, तो 2,000 सबको देते हैं ना। अच्छा बेटा, ओके, गॉट इट। 3 थे, 2,000। हाँ, फिर अपने दारू भी तो पीना है। Okay, guys, what do you do with the rest of your day? Line is easy. Repeat. Okay. Mummy gave you 5 parathas. You ate 2. And you came home and said to Mummy, I ate only 2. तो बाकी कुछ ही किया? What did you do with the rest of the parathas? और पराठा का इंग्लिश पता है ना? पराठा, ओके? ये याद है? बताइए बच्ची, वीडियो में बताइए ना। दैट्स पराठा का इंग्लिश, ओके? ये ओके, बताने की जरूरत नहीं है, बच्चियां हेल्प कर रही हैं, ओके? व्हाट डू यू डू विद द रेस्ट ऑफ योर डे? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, हर जगह विद नहीं पड़ेगा, तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, ठीक है? वो विद का पर्पस भी समझ जाएंगे। बाकी दिन क्या क्या करते हो? बाकी पैसा का क्या करते हो? हिंदी में क्या वर्ड आ सकता है? बाकी पैसा का क्या करते हो? बाकी दिन का क्या करते हो? बाकी दिन क्या करते हो? ऐसा भी बोलते हैं। हिंदी का अलग है मामला, ओके? चलो देखते हैं। एक जगह विद नहीं आएगा तो एक बार करना। देखो, मैंने अब तक जो किया अपनी फैमिली के लिए किया, अब हम अपने लिए जीना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लिव माई द रेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू लिव द रेस्ट ऑफ माई लाइफ for myself. So far, I have lived for my family. So far, I have lived for my family. परिवार के लिए जिए अब तक हम। So far, अब तक। So far, okay? I have lived for my, but from now, okay, I want to live for myself. I want to live the rest of my life. Okay, the rest of my life. बाकी जो बचा है, तो बेटा यहाँ, okay. Eat what you can eat. जो खा सकते हो खा लो. Eat what you can eat and throw the rest of it. And throw the rest of it. बाकी जो है, the rest of it. जो बाकी है ना, फेंक दो. Throw the rest of it. The rest of it. अगर ये सारी बातें रिकॉर्डिंग में चाह ही रही हैं, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे। अब अगर आप इन सारे वर्ड्स को अपने लिहाज से एक सेंटेंस नहीं सोचते हैं, कोई बात नहीं, नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हो पाए तो टाइम देना एंड मेक सेंटेंस, ताकि जल्दी जल्दी सीख सको। जिसका पैर में चोट लगा उसको जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, उसको कहना जितना आराम से चल सको। जिसका पैर तगड़ा है, दौड़ सकता है, कहो दौड़ो दौड़ो, ठीक है? तो सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते चले, कोई घसकते हुए, कोई दौड़ते हुए, ओके? What do you do with the rest of your day?
Hey, aren't you bored? Aren't you bored? Look at this sentence. Aren't you? Bored नहीं हो जाते हो जी? Aren't you bored? Aren't you? अब मुझे ये बोर्ड वर्ड पर ध्यान दो और मुझे बताओ ये क्या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? Aren't you bored? पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। पार्ट ऑफ स्पीच देखो आसान है कर। हाँ ये V3 तो दिख रहा होगा लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ वर्ब है तुम्हारा बी वर्ब। Aren't you happy? Aren't you? Aren't you sad? Aren't you angry? Aren't you married? ये सारे वर्ड्स क्या हैं? Aren't you के बाद Aren't you sad? Aren't you happy? Aren't you angry? गुस्सा नहीं आया तुमको? Aren't you angry? ठीक है, एंग्री वर्ड क्या बेटा? एंग्री वर्ब है। सैड, हैप्पी, तो ओके, aren't you angry? Aren't you happy? तो जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिया और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, मैं पूछूं aren't you happy? Don't you like my gift? Aren't you happy? Don't you like my gift? Don't you like my gift? Like क्या वर्ब है? Don't you like? Aren't you happy? Happy क्या है? Aren't you sad? तुम्हारी सासू माँ की डेथ हो गई। Aren't you sad? Okay, things like that. Okay, aren't you sad? Sad भी क्या बेटा? Adjective. Aren't you angry? गुस्से में, गुस्सा, angry is also an adjective. तो aren't you bored? Bored भी क्या है दोस्तों? Adjective. मैंने कहा है कि एक जैसा हटता वैसा ही आ जाता है। ठीक है, aren't you bored? तो bored is an adjective. मुझे ये जानना है ये V2 है क्या? No, V2 तो आता है सब्जेक्ट के बाद, राइट? काम बताने के लिए, कोई काम पास्ट में हुआ। ठीक है, तो aren't you bored? बोर नहीं होते जी? वही पूछा उसने, दिन भर कुछ नहीं करते हो, बोर नहीं होते हो? aren't you bored? अब जवाब सुनना उसका। टीचर, मेरे जैसे टीचर को टीचर से फायदा उठाना है तो आपको सबसे पहले अपना ईगो साइड करना होगा, अपने इम्पेशंस को कंट्रोल करना होगा, और मुझ पे, मैं क्या ही बोलूं, भगवान की तरह भरोसा करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ सही होते हुए नहीं दिखेगा शुरू में, लेकिन जैसे ऊपर वाले पे भरोसा रखते हो कि वो जो करेगा सही करेगा, यू हैव टू हैव दैट फेथ इन मी। मैं जो करूंगा आपकी इंग्लिश के लिए सही करूंगा और इवेंचुअली आपकी इंग्लिश सही होगी। मैं ऐसा अभी अचानक से ऐसा बोल रहा हूं, मेरी एक स्टूडेंट है अपूर्वा, रो चुकी है 4 बार मेरे क्लास में, 4 बार उसने मुझे रो के फोन किया है। ठीक है, मैं मेरी वजह से रोई, मैंने कुछ बोला उसको। ठीक है, और आज अभी उसके सेंटेंसेस देख के आई एम फीलिंग हैप्पी एंड आई एम मेकिंग दिस कमेंट। जो झेल लिया मेरे को वो सीख जाएगा। झेलने की बात बताता हूँ क्यों। तुमको जो बोला गया ये करोगे सीखोगे, ये करोगे सीखोगे, उससे तो होना है नहीं, करके देख लो, चैलेंज, बात खत्म। इतनी अच्छी बच्ची, लेकिन अब दिमाग ही नहीं काम करता उसका, इंग्लिश बोलते समय उलट पलट होता रहता, अरेंजमेंट गलत होता। मैंने जो कहा कि देखो अपने आप को टेंशन मत दो, छोटे छोटे सेंटेंस जो मैं पढ़ाता हूँ उसको गौर से पढ़ते रहो, 10 बार 12 बार, समय दो, अभी अच्छा करिए। तो आप सब लोग को मेरी हिदायत है, ठीक है, क्या है वो, जस्ट डू नॉट हैव टू मच ऑफ इम्पेशंस। ये जो लोग आपको परेशान करते हैं ना, इतना दिन से नहीं सीखे, इतना दिन से क्या सीखे, वो उन जाहिलों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। ओके, अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तब पर ही वो जाहिल है क्योंकि तुमसे ये सवाल पूछे इतने दिन से नहीं पूछे। ठीक है, ये मत बोलना। हाँ, जो कंसर्न से बात करता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो तंज मारते हैं ना तुम पे कि इतना दिन से सीख रहे, उसको एकदम इग्नोर करो और काम करते रहो अपने। घर जाके जो है मैंने बताया, एक एक लाइन को जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको प्रैक्टिस करना है तो। ठीक है, बच्ची कर रही है, मेहनत कर रही है, उसकी मेहनत पे मुझे कभी डाउट नहीं। बट प्रॉब्लम क्या ना कि वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस ले लेती थी बात। ठीक है, तो उसको उम्मीद थी अपने आप से। अच्छा, अपने आप से उम्मीद रखना इज अ गुड थिंग, राइट? और जब आप अपने आप से उम्मीद रखते हो एंड यू कांट डू इट ना, तो आपको टेंशन होता है। तो रोई क्योंकि मैंने उसकी गलतियां हाईलाइट, तो लगा बार बार इससे कैसे। फिर मैंने उसको कहा कि तुम गलत सोच तरीके से सोचती हो, तुम साबित करना चाहती हो मेरे नजर में कि तुम अच्छी स्टूडेंट हो।
तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करना है अपने इंप्रूवमेंट के लिए। सर के नजर में तुम्हारा इंप्रेशन क्या है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये बातें सुनने में कभी कड़वी लगती है ना, तो समटाइम्स शी क्राइड व्हेन आई सेड सच थिंग्स, बट आई नो हर इंटेंशन, सच अ लवली, वेरी गुड, डेडिकेटेड, शी हैज एक्सपेक्टेशंस, okay, and I am 100% sure, you know, that she will always remember me all her life in a good way. Some people will remember you in a bad way. Okay. She will remember me in a good way all her life. I'm sure about it. Because her career, when whatever she will do in the future, her English is going to play a big role. And whenever she will think about it, she will say, yes, he played a role about me. And I have full confidence. You guys can be one of somebody like her. But again, you have to trust me. चीजें सही नहीं हो रही है तो ये नहीं हो रहा सही नहीं, पेशेंस, परसेवियरेंस, लगे रहना वाली, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी पर्सनल ओपिनियन को साइड रखो, उसको तुम पसंद नहीं करते मेरी पर्सनल ओपिनियन, कोई टेंशन नहीं, उसको साइड रखो, क्योंकि सब नहीं कर सकते मेरी पर्सनल ओपिनियन को पसंद, मुझे पता है लोगों के लिमिटेड। आई डोंट हेट यू कि तुम मेरी पर्सनल ओपिनियन को पसंद नहीं करते, आई डोंट हेट यू, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। कौन है तुम्हारे घर के आसपास है जो मेरी बातें बोलता हो, जो तुम मेरी बात सुन लोगे? तुम्हें तो मेरी बातें कर भी लग सकती है, पर्सनल ओपिनियंस ऑन मेनी थिंग्स, बट व्हेन आई टॉक अबाउट इंग्लिश, डजंट मैटर कोई क्या बोलता है, उसको इग्नोर कर दो, मेरी बात मानो इंग्लिश के मामले में, ओके। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मेरे पर्सनल ओपिनियन पे तो मुझे इग्नोर करो, नो इश्यू, बट व्हेन आई टॉक अबाउट इंग्लिश, जस्ट लिसन टू मी एंड डू व्हाट आई हैव बीन देयर, I know the path. I know the path very well. I'm guiding you through the same path that I have covered myself. Okay? I have walked myself. So I know this path so very well. I'm so happy with that girl Apurva sentence. So good. Okay. कभी कभी बच्चे अपना प्रैक्टिस से खुश कर देते हैं, साजिद यू आर आल्सो डूइंग राइट, ओके। एंड आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस रोज चाहिए, 10-15 मिनट, आधे घंटे रोज लिखना है ग्रुप में। जब से मैंने ये बात कही है ना, सम स्टूडेंट्स हैव बीन इरेगुलर, प्रेशर फील कर रहे हैं कुछ लोग कि रोज प्रैक्टिस करना है जी, ओके। जो मैं पढ़ाऊँ वही प्रैक्टिस करना, जैसे आज फिश हो गया, जैसे आज मोर हो गया, जैसे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हो गया, शुरू में मैंने बताया, ठीक है। तो जो पढ़ा वो प्रैक्टिस करना है, थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि बस अपने मन से कुछ ही प्रैक्टिस करो, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आई एम टीचिंग यू समथिंग, यूज दोज वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू से समथिंग अबाउट योर लाइफ, दैट्स ऑल, ओके। व्हाट डू यू डू विद द रेस्ट ऑफ योर डे? आरंट यू बोर्ड? I'm never bored. द फिशरमैन स्माइल, ये तो बोलेगा तो नहीं, ये बात बोलने को सुनने को मिलेगी, उस मुस्कुरा के जवाब दिया, द फिशरमैन स्माइल, आई एम नेवर बोर्ड, आई एम, look at the sentence, bored is a verb or an adjective here, I am never bored, verb क्या है यहाँ पे, बी verb, अच्छा। कल मैं सो गया जा करके, आपको नहीं पढ़ाया है, राइट? And I really respect that you guys behave yourselves in the class without me, you know. And this is why sometimes when my students feel sleepy, I don't wake them, because I know sometimes, sleep just takes over. You can't do anything about it. Where was my energy yesterday? Why couldn't I do what I'm doing today? I was supposed to do this yesterday, but I just couldn't do it. And in that moment, if you had not understood my situation, if you had said something, or if you had made a lot of noise while I was lying on the sofa in the office there, then I would have felt really bad. So I really appreciate you guys. You guys were lovely yesterday. Thank you. Okay, let's continue. Oh, I'm never bored. I'm never angry. I'm never, okay, listen to this line. आप ऐसा आप लोग भी ये never underline this whole thing, okay? I want you to use this. फिर बाद में recording तो होगी। हम ना सुबह में हमको भूख नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है। I'm never hungry in the morning, ठीक है? I'm never, हमको लड़की लोग पे गुस्सा नहीं आता। I'm never angry with girls, क्योंकि झूठ है। Okay. Okay.
मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ. I'm never angry enough to hit my girl students. I'm never angry enough to hit my girl students. मुझे कभी इतना गुस्सा नहीं आता है कि लड़की को मार दें. लड़कों को कभी लगा दिया एक दो, लेकिन I'm never angry enough to hit a girl. Yeah, hit a girl. Okay, I'm never angry enough to hit a. अब जब गुस्सा बहुत ज्यादा होता है तभी ना, अगर इतना हो गया गुस्सा जितना होना चाहिए कि लड़की को थप्पड़ लगे तो ही लगेगा ना. I'm never angry enough to hit a girl. At worst, I shout at them. At worst, I ज्यादा से ज्यादा होता है खराब तो क्या होता है. हाँ, I at worst अच्छा फ्रेज है ना. At at worst मतलब ज्यादा से ज्यादा जो खराब होएगा तो क्या होगा. I shout at them. At worst, I shout at them. तो ये at worst भी तुम अपने सेंटेंस में डाल सकते हो कि मेरी मम्मी is a very calm person. At worst, she stops talking to people. मतलब ज्यादा से ज्यादा खराब क्या होता है, वो बात करना बंद कर देती है. Right? So, okay, fine. What is there? Normally cats do this thing. They make a noise when you are sleeping at night. They'll touch this thing, touch that. I was reminded of the saying. There is a cat kicking the box, trying to find out some food, some mice there. Okay. I'm never bored. ना भैया, हम तो कभियो बोर ना होते हैं. हम ना होते बोर. I'm never bored. Okay. पर मैं इंग्लिश क्लास में कभी बोर नहीं होता. कैसे बोलेंगे. हम तुम्हारे साथ रहते तो कभी बोर नहीं होते. I'm never bored with you. Easy, short. अलग से आते तो never bored when I am with you. That's okay. But I'm never bored with you. Okay, fine. I get up late, play with my children. I get up late. Everybody wants to play with my children. Watch football and take a siesta with my wife. And take a siesta with my wife. Siesta. Afternoon sleep. In hot countries, some people sleep in the afternoon. In hot countries, it's common. In hot weather, in summer season, you do that. You sleep in the afternoon. Your body needs rest in the afternoon. You don't. My sister doesn't either. She never sleeps in the afternoon. She never sleeps in the afternoon, my sister. But I do. I sleep. My mom sleeps. My wife also sleeps. My daughter sleeps. Everybody sleeps. My sister's children sleep. But my sister never sleeps in the afternoon. She only sleeps at night. Okay. She never sleeps during the daytime. Never. I think she has got good energy. All right. Yeah. Feels good. Okay. Feels good to know that yes, my sister has good energy. Okay. She doesn't sleep during the day. Okay. But everybody else in my family sleeps. Some more, some less, but they all sleep. My sister never sleeps in the afternoon. Okay. Only when she's sick or she has traveled, then like that's a different situation. When you have traveled, then your body is tired. But on a normal day, she will not go to sleep. It's my sleep time now. Okay. So I'm never bored. I get up late, play with my children, uh, watch football, and take a siesta with my wife. Sometimes in the evenings, I walk to the village. Sometimes in the evenings, I walk to the village. रोमांटिक आइडिया आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा फिल्मों में, गानों में, जो कि सच्चाई तो बोलते नहीं कभी. ओके. इंडियन मूवीज नेवर टेल यू द रियलिटी. रियलिटी हस्बैंड वाइफ या जो आपकी शादी होगी या पार्टनर होगा, सबसे बेस्ट टाइम पता है क्या होता है? दोपहर में सोने में. Such a, I will say, blessing it is, when you have time that you can afford to sleep with your partner in the afternoon. Most people can't. They have work. They are at work and they can't come home to sleep with their wife in the afternoon. But if you can, I'm telling you, it is pure gold. That is real, romantic feeling. Yeah. Relief and respite and blessing, whatever you call it. Okay, it's fantastic. पहले तो तूने कहा ये क्या बोल रहे हो सर, छोड़ दो सर, जाने दो.
फिर मैंने देखा तो कहता अच्छा ठीक है, हाँ सही बोल असीम you're feeling shy, Asim? Okay, let me make him more embarrassed a little bit. Asim, would you like to sleep in the afternoon with your wife? वक्त आएगा तो, वो आएगा तो तुम मुझे फोन करोगे सर, यस सर, आई एम sleeping. ओके सर, बात बताना था सर, आपने पूछा था, मैंने कहा था वक्त आएगा तो बताएंगे, वक्त आ गया है सर, सो आई एम टेलिंग यू सर. ओके फाइन ना, इट इज अगेन यहाँ के वो लोग सच्चा तो बोलते नहीं, खाली गाना वाना दिखाएंगे, चार लोग डांस करे, कौन करता है यार, कौन करता है ऐसा. या यू स्लीप, ओके. So take a siesta with my wife. Sometimes in the evenings, To see my friends. I walk to the village to see my friends. Okay? Play the guitar Play the guitar and sing some songs. and sing some songs. Wow, life like a king. You know, fantastic lifestyle. You know, the American though, he does not value it. Okay? Businessman, listen. Really? That's all you do? देखा क्या मिला बेटा? The American couldn't understand. और वहां बोला उसने क्या? Really? That's all you do? Really? That's all you do? He wants to say in Hindi, बस यही करते हो. Really? That's all you do? Now suppose there is a strong man and you ask him, hi, what's your diet? What do you eat for breakfast? And he says, two rotis and a little bit of sabji. What? That's all you eat? Your reaction will be? What will be your reaction? That's all you eat? In Hindi? Okay. बस इतना है, इतने खाते हो, दो रोटी और इतना सब्जी for this body. That's all you eat. That's all you eat. Okay? Any problem? That's all you eat. Now winter season is coming. So maybe you guys will make phone calls to each other and ask, "Koji pehne rahe?" Ah, वो t-shirt और shorts. कहाँ? इतना ठंडा में t-shirt shorts नहीं पहने हुए. That's all you are wearing. That's all you are wearing. What's it now? Yeah, I'm inside the house, so no problem. Oh man, I'm also inside the house, but I'm wearing two sweaters. Okay, that's all you are wearing. That's all. Okay, two boys are quarreling. The teacher called them into the office. I झगड़ा किया. Sir, ये हमको बोला ना कि सर हम कुछ नहीं बोलती, सर हम खाली इसको बोले कि तुम्हारा कॉफी सुंदर है, इसलिए मारने लगा. तुम खाली इतने बोला था, कॉफी सुंदर है, तुम खाली इतने बोला था. तो वो कैसे रहा? That's all you said, huh? You only said that the notebook is beautiful, or you said something about my sister as well. The teacher ने दंडा उठाया, क्या बोला रे? Why did you say something about his sister? Okay. ऐसा ही जजमेंट होता है ना हमारे यहाँ. पूछना भी नहीं क्या बोला था सिस्टर के लिए. उसने कहा था your copy is beautiful like your sister. Okay, your copy is beautiful like your sister. मारा मारी हो गई. दो लड़कियां अगर किसी लड़की को बोले योर नोटबुक इज हैंडसम लाइक योर ब्रदर, वो नहीं लड़ाई करेंगे, और पागल हम ही लोग हैं. ओके, या आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. दोनों बहनें हैं, राइट? किसी को बोल देंगी कि योर ब्रदर इज हैंडसम, तो थोड़ी लड़ाई करने लगेगी लड़की. क्यों बोला मेरे भाई को हैंडसम? डोंट ट्राई दिस विद अ बॉय, योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल. और लड़का लेके मारेगा. ओके, ऑलराइट. व्हाई? व्हाई? Because we are a patriarchal society. We say girls are our izzat, girls are our family izzat, family prestige. कोई बोल देगा रे, हमारा इज्जत खराब कर देगा. सब चीज अपने आप पे लेते हैं. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. बेटे के बारे में कोई बोला, नो प्रॉब्लम. बेटी के बारे में बोला, लड़ाई करेंगे. ओके फाइन, मूविंग ऑन. The American couldn't understand. उसको समझ में नहीं आ रहा था ये आदमी. That's all you do?
बस यही करते हो जी? Look, I am a very successful businessman. तो कई बार जो बोला जाता है वो एग्जैक्ट नहीं लिखते, उसका मतलब लिख दो। रियली, दैट्स ऑल यू डू? वो लिखने की जगह क्या लिख दिया? द अमेरिकन कुडंट अंडरस्टैंड। लिसन टू अ लाइन, जाओ ना तुम अपना काम करो ना। किसने ये कहा? कहानी में लिखा गया, उसने बदतमीजी से जवाब दिया। कहानी में क्या लिख दिया गया? लेकिन उसने बोला था जाओ ना तुम अपना काम करो ना, ठीक है। और उस बात को कैसे लगा, कहानी में कैसे बताएगा? उसने ऐसे कोई वर्ड तो बोले नहीं गए, ऐसे बदतमीजी ये वो, उसने कहा जाओ ना अपना काम करो ना। हाँ सही है, सही है कि उसने इज्जत नहीं दी, तो इसी बात को ऐसे लिख दिया है, उसने बदतमीजी से। ये ऑलराइट, आइए आइए अंदर आइए। अब इस बात को कहानी में कैसे लिखेंगे दोस्तों? बहुत अच्छा, उसने रिस्पेक्ट से अंदर आने के लिए कहा, बहुत अच्छा। और वो सोचो कहानी में और कैसे लिखेंगे इस बात को? सिचुएशन यही है, आइए आइए अंदर आइए। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आदर पूर्वक बुलाया, तो एकदम तैयार है इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि जो आदमी हिंदी में ये सब सोच सकता है वो आगे इंग्लिश में ये सब आने वाले हैं, और इसी को अच्छी इंग्लिश कहते हैं, हायर लेवल पे, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में एक जगह बनी हुई है, इसलिए तुम ऐसे ऐसे घोड़े की तरह दौड़ते हुए आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि बनी हुई जगह। और कोई बोलो। मैंने कहा आइए आइए अंदर आइए। इस बात को स्टोरी में और कैसे लिखा मिला मिला मिल सकता है हम लोग को? यही बात हुआ होगा, लेकिन स्टोरी में कैसे लिखा मिल सकता है? देखते हैं तुम्हारी हिंदी कैसे, और कैसे, और क्या लिखा मिल सकता है? वो बहुत अच्छे से पेश आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए दोनों सेंटेंस में शब्दों में कितना फर्क है, लेकिन आइडिया तो एक ही एक्सप्रेस हुआ ना। वो मुझे बहुत अच्छे से पेश आए, बहुत अच्छा। आइए आइए अंदर आइए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। देखो जब मैं खुश रहता हूं ना, मैं आज तक ये एग्जाम्पल दे के अपने 17 साल के करियर में नहीं पढ़ाया, ठीक है। मेरा हर क्लास 30% तो कम से कम एकदम अलग होता है, न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ये डिपेंड करता है द स्टूडेंट्स आर फन और नॉट। अगर आप लोग बोर करोगे मुझे, आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग न्यू। मन ही नहीं करेगा, मोटिवेशन ही नहीं आएगा। ओके, गो हेड। मैं वो डॉक्टर ही जिससे ठंड बुखार के इलाज करता रहता है, ठीक है। मेरे हर समय नए नए बीमारियां, नए नए इलाज, नई नई दवाइयां मैं बनाता रहता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने अभी जो दिया, मैंने लाइफ में नहीं दिया कभी। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग्स ऑफ माई क्लासेस फ्रॉम लास्ट 1 year, यू विल नॉट फाइंड दिस एग्जाम्पल एनीवेयर कि मैंने ऐसे बोल के समझा दिया ये बात। थैंक्स टू यू गाइज मोटिवेट मी टू डू बेटर। गो अहेड। और कैसे बोल सकते बेटा? बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी बचे हुए हैं। उसने सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया, क्या बात है। और सोचो, उसने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया, कैसा लगा? ये भी है ना अच्छा। उसने गर्मजोशी से हमारा, आइए आइए अंदर आइए। उसने हमें ससम्मान अंदर बुलाया, उसने हमें ससम्मान अंदर बुलाया। कई तरह से हम लोगों ने ये बात बोल दी हिंदी में। हुआ क्या था? खाली ये वाली लाइन, आइए आइए अंदर आइए। तो ये हम सबके पास है, आइए आइए अंदर आइए। लेकिन ये जो हिंदी में बताया ये सबके पास नहीं है, एक्सेप्ट करिए इस बात को। और यही फर्क पड़ेगा बोलचाल की हिंदी में और अच्छी हिंदी में, इंग्लिश में, सॉरी, बोलचाल की इंग्लिश में और अच्छी इंग्लिश में। अच्छी इंग्लिश ले जाने के लिए मुझे अच्छी हिंदी आपके दिमाग में होनी चाहिए, इस तरह की दिमाग में होनी चाहिए, मुंह पे हो चाहे नहीं, दिमाग में रहनी चाहिए। और बाकी बोलचाल वाली आइए आइए अंदर आइए वाली तो हम इंग्लिश करा लेंगे एलिमेंट्री कोर्स खत्म होते होते, ठीक है। कैन वी कंटिन्यू? The American couldn't understand. The line was, that's all you do? Look, I'm a very successful businessman. I went to Harvard University and I studied business. I went to Harvard University and I studied business. Past tense. I went to Harvard. वो अपने बारे में बता रहा है कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए, बिजनेस की पढ़ाई की वहां। I can help you. हम आपकी मदद कर सकते हैं।
ये नहीं है कि आप कोई बात के लिए फंस जाएंगे पास्ट टेंस है तो सब जगह पास्ट टेंस, ऐसा नहीं होता। आपको जो चाहिए, जो बात बतानी है उसके हिसाब से बोल दीजिए। हम वहां पढ़ाई की, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। Fish for 4 hours every day. फिश फॉर 4 hours एवरी डे। ये फिश क्या है? नाउन की वर्ब। फिश फॉर 4 hours एवरी डे। महसूस क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है? मुझे महसूस वाला वर्ड पूछना है, पता है, क्योंकि हम आपको महसूस कराना चाहते हैं इंग्लिश धीरे धीरे। फिश फॉर 4 hours एवरी डे। 4 घंटा मछली मारो। फिश फॉर 4 hours एवरी डे। ओके, कैट फॉर 4 hours बोल सकते हैं, बिकॉज कैट इज नॉट ए वर्ब। ओके, फिश फॉर 4 hours एवरी डे। ये भी एग्जाम्पल देके नहीं पढ़ाया मैंने, कुछ और तरीके से बताया होगा। ओके, फिश की जगह कैट लगा के नहीं समझाया मैंने ऐसे पहले। आपका क्लास मोटिवेट्स मी टू टीच यू बेटर बिकॉज ऑफ सो फार यू हैव बीन डूइंग ग्रेट। मैं कह रहा हूं और बेहतर कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू गाइस प्रैक्टिस एवरी डे, you guys will never have regrets for coming here, spending time here and paying me. You will always recommend other people, this class to other people. Just do what I'm saying. Go home, watch the recording and practice a little bit. और जिससे प्रैक्टिस नहीं होता वो दूसरों की प्रैक्टिस को पढ़ ले, रिकॉर्डिंग देखे, सोचे इसके बारे में, दिमाग दड़ाए बस। इसमें स्कूल ने बहुत गंदा रोल प्ले किया। आई टीच यंग किड्स एज वेल। Those are with me for last those have been with me for last 5-6 months 7 months। तो उनकी एक आदत है, मुंह से कुछ कुछ बोल देते हैं तो ये एकदम रिलैक्स बैठा रहता है। मैंने सामने टेक्स्ट रख दिया, ऐसे ऐसे करके होठों को हिला के पढ़ देते हैं। यहाँ कुछ नहीं, जीरो एक्टिविटी नहीं हुई यहाँ पर। ये दोनों में डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं तो ये डायरेक्ट करता है इसको चलने के लिए, लेकिन जब वो पढ़ने की बात आती है तो आंख देखता है अक्षर को और मुंह से आवाज निकल जाती है और ये रिलैक्स रहता है कि क्या हुआ, उसका मतलब क्या बोला गया है, हटा लो, क्या बोले कुछ नहीं पता, क्या बोले थे वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते एक शब्द। तो ये डिस्कनेक्ट कैसे डेवलप होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं बताया जाता है जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, हटाओ यहाँ से कनेक्शन, बस देखते के साथ पढ़ दो किसी तरह से। सच अ बैड हैबिट। फिश फॉर 4 hours एवरी डे। आधे घंटे प्रैक्टिस करो, कैसे बोलेंगे? हाफ एन आवर एवरी डे। प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। हाफ एन आवर, आधे घंटे, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आधे घंटे, आधे घंटे, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। ओके, एक ही शब्द में बोल जाओ ना, एक बार बोले हाफ एन आवर, यही है आधा घंटा, हाफ एन आवर। इसको 3 वर्ड मत सोचो। ओके, हाफ एन आवर, एक वर्ड सोचो, हाफ एन आवर। ओके, आधे घंटे। प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। ओके, ये हाफ एन आवर। ओके, और सच में अंग्रेज इसको एक वर्ड के तौर पे बोलते हैं, मैंने ऐसे नहीं बोला था। अंग्रेज 3 वर्ड के तौर पे बोलते नहीं है, लिखते हैं, बोलते एक वर्ड है, हाफ एन आवर। वो कभी नहीं बोलेंगे हाफ एन आवर, वो नहीं बोलेंगे हाफ एन आवर। एक वर्ड सुनाई पड़ता है, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। आई रिमेम्बर, अब तो चीजें बदल गई, बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2007, 6 and 7, मेरे को कई बार लोगों ने कहा आप ना जो बोलते हैं नहीं समझ में आता है, नहीं समझ आता। कोच ही बोले हाफ एन आवर, कोच हाफ एन आवर मतलब। तो ऐसे पूछा गया है कि आप ऐसे कैसे, मतलब काहे ऐसे काहे नहीं बोले हाफ एन आवर, जब बाद में रोका तो अच्छा तो ऐसे काहे नहीं बोले थे, हाफ एन आवर काहे बोले। और ऐसे कई वर्ड्स हैं जो मैं सटा के बोलूंगा क्योंकि उनको सटा के बोला जाता है, वो लिखे जाते हैं अलग अलग, बोले जाते हैं एक साथ। इसको कहते हैं लिंक करना, और ये नेचुरल है। जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी तो ये सब अचीव होता जाएगा आपको, हम करवा नहीं सकते आपसे। but as you grow older तो it will be automatically part of your style of speaking। जैसे मैंने बोला पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। तो ये जिस तरह से मैं बोला पार्ट ऑफ योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, तो ये रोक करके बोलना मेरे लिए नेचुरल नहीं है। और ज्यादातर जो इंग्लिश बोलते हैं वो इसको ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैंने अभी बोला था, पार्ट ऑफ स्टाइल ऑफ योर स्पीकिंग। ओके, तो इसमें कुछ वर्ड्स मिक्स हो रहे हैं, नहीं तो आप होगा पार्ट ऑफ योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। ओके, लेकिन ऐसे बोलना नेचुरल नहीं है।
तो अगर आप नेचुरल सुनेंगे तो धीरे धीरे नेचुरल हो भी सकते हैं. ओके. Okay, fish for 4 hours every day And sell the extra fish you catch. 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 Sell मतलब नासिर हुसैन. Sell. हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा. Sell the extra fish you catch. Sell the extra fish you catch. बेच दो. Sell the extra fish you catch. But Then you can buy a bigger boat. Then you can buy a bigger boat. Then you can buy a bigger boat. Buy a bigger boat. Big boat क्यों नहीं बोला मेरे बच्चों? Big क्यों नहीं बोला? Bigger क्यों बोला है? ये जो है ना अभी उससे बड़ा, खाली बड़ा नहीं बोलना है उसका मतलब. किससे? जो है ना उससे बड़ा है. Buy a bigger boat. So after the breakup, your friends say you will find a better partner. Right? Whenever you have a breakup, your friends will say, don't worry, you will find a better. मतलब समझ रहे हो ना? Exactly, right? Your friends are so sweet now when they say that. Yeah, friends are so sweet when they say that. Don't worry, you'll find a better partner. Okay, he was not worth it. He was not worth you. Okay, he didn't deserve you. She didn't deserve you. Yeah. Okay. So sell the extra fish you catch. Sell the extra fish you catch. जो extra fish हो ना, बेच दो. And then buy a bigger boat. Bigger. Catch more. Catch more and earn more money. but Then buy a second boat. But oh, he's so passionate, the businessman is when he's giving advice. He doesn't listen. He doesn't care. Yeah. But then buy a second boat, a third, and so on. So on मतलब समझ में आई क्या होगा? Fourth, fifth, sixth, so on. Until, कब जाके रोकना है? Until you have a big fleet of fishing boats. खरीदते जाओ जब तक, हिंदी में, a big fleet of fishing boats. Fleet means group. Okay. Lots of boats, a big fleet, not a small fleet, a big fleet of fishing boats. जखीरा लगा दो एकदम. क्या बोलते हैं? जखीरा. जखीरा नहीं, जखीरा. जखीरा लगा दो. खीरा. खा ग्लॉटल और बिना ग्लॉटल अंदर से. जखीरा. Okay. All right. So yeah, big fleet of fishing boats. Okay, until you have a big fleet of fishing boats. Okay. Glottal. जब पीछे से आवाज थोड़ा सा यहाँ से निकालना होता है ना, तो उसको ग्लॉटल बोलते हैं. जैसे एक होता है क और एक होता है ख. एक होता है ख, होता है ख. Okay, so this is the second one is called glottal. Okay, मतलब कि हल्का सा जीभ के पिछले हिस्से से ग्लॉटल, यहाँ पर से जो आवाज निकलती है. एक होता है ग, एक होता है ग. ओके, तो जैसा कागज ना कि कागज, कागज है ना. खराब ना कि खराब, लेकिन हम लोग आदत डाले हुए हैं खराब बोलने की. खराब. ओके. ओके, मूविंग ऑन. बहुत मेहनत करी है मैंने, मैं बता सकता हूँ. सिर्फ इसलिए कि मेरे को कुछ नहीं मिला ऐसे, क्या कह सकते हैं, गिफ्ट में. आई अर्न एवरीथिंग. आई वॉज अ प्योर बिहारी बॉय हु से शादी में जा रहे हैं. क्या बोलता था? शादी में जा रहे हैं. यहां से शुरू हुआ है मेरा. शुरू भी तो शुरू हुआ है, पहले शुरू होता था मेरा. ठीक है, पहले मेरा शुरू होता था, फिर बाद में वो शुरू हुआ है. ओके, तो शादी में जाके जो रोना शुरू करते थे हम लोग, ठीक है, मम्मी के सामने, तो वो उस तरह से हम भी बोलते थे. ठीक, अभी भी है वो. बहुत रिलैक्स हो जाएंगे ना, तो वही आएगा. घर परिवार वालों के सामने, जिनके साथ बड़े हुए हैं, बचपन बिताए, उनके सामने ये वाली हिंदी नहीं निकल पाएगी भाई. एकदम बिहारी हिंदी बोलेंगे. ठीक है. It is something I earned along the way, thanks to my companions, all the people I met and spent time with. They all impacted me. They all influenced me in a good and bad way. Okay. Yes.
Where were we? So buy a second boat and third and so on. And nice phrase, okay? So on. मतलब उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना and so on और ऐसे ही until and हाँ तो जब भी कोई प्रोसेस करते रहने की बात है और until बोले तो रोकने की बात हो रही कब रोकना है okay study 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 until you become confident okay तो until मतलब जब confident हो जाए तो छोड़ सकते हो eat 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 until you feel full up until you feel full up खाते रहो जब तक पेट ठीक मारते रहो जब तक सच ना बोले keep hitting him until he tells the truth okay yeah okay speaks the truth okay can we continue A third, and so on, until you have a big fleet of fishing boats. a fleet of cars a fleet of bikes a fleet of ships a fleet of boats okay so a fleet is lots of those again ये है कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में इसको कहते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ ढेर सारी मछलियां होंगी ना तो फ्लीट ऑफ फिश नहीं बोलना है बोलेंगे स्कूल ऑफ फिश क्या बोलना है ढेर सारी मछलियां होंगी ढेर सारी मछलियां ऐसे घूम रही हैं ऐसे साथ में घूम रही हैं तो आप उनको कहते हैं स्कूल ऑफ फिश a group of fish okay मक्खियां आ गई ढेर सारी ना fleet of bees ना school of bees a swarm of bees swarm 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 a swarm of bees ढेर सारी मधुमक्खियां और बताओ ढेर सारी चींटियां okay normally we say an army of ants and खास करके जब कुछ करने जा रही हो तो लाने जा रही हो अटैक करने जा रही हो फूड और जब पड़ी हूं अपने घर में तो बोलते हैं अ कॉलोनी ऑफ एंड्स और सबसे मजेदार सुनना ढेर सारे उल्लू बैठे होंगे तो उनको कहेंगे ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स ए पार्लियामेंट ऑफ कितना सही लगता है क्या सही रखा है ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स ढेर सारे उल्लू एक साथ उनको क्या कहते हैं There is a parliament of owls on my roof. ढेर सारे उल्लू है मेरे छत पे. There is a parliament of owls on my roof. ये प्रैक्टिस कर लेंगे. रिकॉर्डिंग में आ गई है बातें. नोट्स भी ले सकते हैं घर पे. Okay. Until you have a big fleet of fishing boats. तब जाके छोड़ देंगे. And you can export the fish and you can export the fish. Export, sell in another country, sell to another country. Okay, yeah, you can export the fish. leave this village and move to Mexico. And move to. चले जाओ रहने. Move to Mexico, Mexico City, LA, Los Angeles, or New York City. These are big cities. Okay, when you go to a big city, business is big as well, right? Yeah. City or LA or New York and open a fishing business. क्या idea, huh? Open a fishing business. All right. The fisherman tried to speak in the middle, but he didn't let him. Okay. But how? This is not mentioned here. अगर आप चाहते तो लिख सकते थे. Okay. Finally, the fisherman got the chance to say something, and he asked. ऐसे कर सकते थे? इस बात को ऐसे लिख सकते थे? Finally, the fisherman got the chance to interject, to say something, right? And he asked, but how long will all this take? How long will all this take? But how long will all this take? अभी पहला लाइन और इस लाइन को कंपेयर करो. How long did, how long will, समझ में आया फर्क? How long will all this take? कितना समय लगेगा? फर्क समझ में आ रहा है? बार बार आ रहा है तो याद पड़ जाएगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. How long will all this take? Will आते लगेगा, did लगा, लगे past. How long will all this take? कितना दिन लगेगा ये सब करने में? कितना समय लग जाएगा? Let me think. Let me think. He was not ready. He had to think. तो लगा नहीं था पूछेगा ये. Okay? He was not expecting. If you are expecting a question, then you will know the answer. You will answer.
But he says, let me think. Probably about 15 to 20 years. Probably about 15 to 20 years. उसने इस बारे में सोचा नहीं था ये सवाल पूछा जाएगा। इसका मतलब इस बात के लिए, इस बात का कोई इसके नजर में वैल्यू नहीं था कि कितना समय में होता है। If he cared about it, he would mention it, right? But when he asked, कितना दिन लग जाते ये सब करने में? How long will all this take? Wait, let me think. Probably. Can you say the word? 90% of your teachers will say probably. Teacher, forget about the student. जब टीचर बोलेगा probably, तो स्टूडेंट क्या सुनेगा और सीखेगा क्या? और फिर बाद में उसी स्टूडेंट को सुनाया जाएगा कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बताओ। मतलब कि तुम्हारे साथ हम गलत कर रहे हैं, बाद में तुम्हें कहें कि तुम गलत हो। क्या मतलब? उल्टा चोर को सवाल करा। किसी टीचर को तो हक नहीं है बोलने का किसी स्टूडेंट को कि प्रोनाउंसिएशन खराब है। मैं भी नहीं बोलना चाहता किसी, चिढ़ा दे तो कोई बात अलग है, बट आई अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्यों खराब है। जब कोई ओवर कॉन्फिडेंट होता है तब मैं बोलता हूँ, नहीं तो नहीं। तो टेल देम कि अभी भी बहुत जगह है इम्प्रूवमेंट, तो मैं गलत हूँ। तो probably आयत probably कितना आसानी से वो बोली है probably। वो सुनो आयत, वो कितना बोलना probably, ठीक है? क्यों? आदत है ही नहीं खराब बोलने की, बढ़ी ही नहीं अभी, तो जो सुना वही बोल दिया। आवाज रिपीट करने में कौन सी मुश्किल? probably नई आवाज थोड़ी है इसमें। लेकिन कुछ बड़े लोगों को जिनको आदत है probably बोलने का, मेरे आ जाओ सीनियर क्लास में, वहां स्ट्रगल ज्यादा होगा। उन लोग ना probably की जगह probably बोलेंगे, और अगर मैं करेक्ट कराऊं तो क्या बोले सर, फिर से बोलिए। 5 बार करेक्ट करवाएंगे मुझसे ही, नहीं होगा सही, फिर मैं फ्रस्ट्रेट होकर बोलूंगा करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार में सही बोली probably। आया या probably, देख रहे हो ना? तो क्यों मुश्किल हो गई? आदत जो नहीं है, तो बुरी आदतें बचाइए अपने आप को। अपने आप को मम्मी पापा कह दिए कि हमारी इंग्लिश की पढ़ाई बंद करवा दो सब जगह, जहां हम जा रहे हैं काफी है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। और नहीं तो सिर्फ टेक्निकल स्टफ पढ़ो, ठीक है? जो भी जानकारी दे रहे हैं सिंगुलर प्लूरल ये सब, और जहां भी कुछ लगे कंफर्म विद मी, ओके? क्योंकि तुम्हें पढ़ाया तो जाएगा इंग्लिश स्कूल में, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है? पढ़ाया तो जाता ही होगा इंग्लिश, राइट? मेरी बच्ची को इसी उम्र में एक टीचर से ज्यादा थोड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि उसने उनको कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो बच्ची की बात तो शायद 6-7 साल की थी, नायक की उम्र की थी, तो उसको उसके टीचर का ईगो हर्ट हो गया एंड शी हिट हर, एंड आई सेड नेवर एवर डू दैट। ठीक है? बच्चे मासूमियत से बोलते हैं जो बोलते हैं, दे डोंट वांट टू हर्ट यू। Okay, so you have no explanation or defense for this behavior. You can't hit the child for saying something that the child feels inside. ठीक है? बच्चे क्या फिल्टर रखते हैं? बच्चे के पास फिल्टर होता है। फिल्टर मतलब समझते हो ना? टू थिंक अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट टू से। उनको जो फील होता है दे से इट। So you should be grateful that you have some children around you who can just make you feel real. Because बड़े लोग तो हमेशा संभाल के बोलते हैं, जो आपको सुनना है वो बोलते हैं। You get fed up with that. सच्चाई बोलने वाले लोग अगर हैं आपके आसपास, then you should be grateful. So I love having children around me. Children who can just say whatever they feel. Okay. Yeah. Anyways, coming back. Oh, it's 5 o'clock. So we will finish probably about 15 to 20 years. The businessman was not ready with this answer. He had to think. Let me think. So when you are giving advice and somebody asked you a related question and you said, let me think, it means you did not value that aspect. उस पर उतना ज्यादा काम नहीं किया आपने, सोचा नहीं आपने. So read this and try to do exercise 5, नहीं, what do you think section. What do you think? आप अपने घर में ये what do you think section अपने परिवार से डिस्कस करोगे. What do you think? देखो what do you think में क्या है. मैं चाहूंगा कल हम लोग इस बारे में बात करें. What do you think? उसमें है डू यू थिंक द फिशरमैन फॉलोज द बिजनेसमैन्स एडवाइस. आप अपनी ये कहानी सुना दोगे मम्मी पापा भाई बहन को और उनसे पूछोगे आपको लगता है कि फिशरमैन फॉलो करेगा बिजनेसमैन का जो एडवाइस आया, उसको मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो क्यों नहीं मानेगा, मम्मी पापा से पूछना है. और मानेगा तो क्यों मानेगा. ठीक है? मानना चाहिए ये भी पूछ लेना. ठीक है? आपके हिसाब से क्या है, मानना चाहिए उसको, क्यों मानना चाहिए, और नहीं मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए. You are going to discuss this with all the people you have. कोई अकेले तो नहीं रहता जंगल में. Okay,
देन कल अगर आए आप ऐसे ही, मैं आपको कुछ दे रहा हूं टास्क, तो उसको वैल्यू करें। आई वॉन्ट डिस्कशन, ताकि मुझे पता चले कि आपके घर में लोग किस तरह से सोच रखते हैं और आप किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं उस सोच से। तो यू आर गोइंग टू डिस्कस विद एनीबॉडी, इंग्लिश में नहीं, इन हिंदी। ऑलराइट, डिस्कस एंड टुमारो आई वुड लाइक टू हियर व्हाट दे सेड। उन्होंने क्या कहा मुझे कल आप बताएंगे। ओके फाइन, सो डिस्कस इन डिटेल। एंड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, वो चारों पढ़ लेना, ठीक है। आई विल सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।